Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English and these are the headlines of the prime time. Will give a fitting reply to Pahalgam attack. The army has full freedom, says the Prime Minister. Key remarks by Supreme Court in Pegasus spyware case. Bench says national security will not be compromised. French and Israel has agreed for the entry bans. Chief Minister Revanth Reddy has called for a crucial meeting on the Miss World pageant arrangements. Uttam Kumar Reddy slashes BRS government, says Medigata is a mistake done by the previous government. Canada goes to Corneve. Liberals have yet again crashed the victory. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday chaired a meeting with the top defence establishment, including Defence Minister Rajnath Singh, National Security Advisor Ajit Doval, and the chiefs of three services. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan was also part of the meeting, which was held amid India weighing its countermeasures following the Pahalgam terror attack, which left at least 26 civilians, mostly tourists, dead. Modi has vowed to pursue the terrorists behind the attack and their patrons, a clear reference to Pakistan, which has a history of sponsoring terror strikes in India to the ends of earth and inflict harshest punishment on them. Turkish President Tayyip Erdogan has urged Pakistan and India to de-escalate rising tensions following small arms fire exchanges linked to last week's deadly attack on tourists in Kashmir. Following last week's deadly attack on tourists in Kashmir, Turkish President Erdogan has urged for a de-escalation between India and Pakistan after both countries exchanged small arms fire. Erdogan made the statement in Ankara after a cabinet meeting, emphasizing the importance of peace. This comes just days after Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif's visit to Ankara, where discussions may have touched the regional stability. Ülkemizi ziyareti ise bölgesel gelişmeler bağlamında hassas bir zamana tekabül etti. Görüşmemizde ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere Pakistan'la çok boyutlu işbirliğimizi ele aldık. Kardeş Pakistan halkına olan güçlü desteğimizi tekrar teyit ettik. Türkiye olarak bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Pakistan'la Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz. Dışişleri Bakanlığımız ve diğer birimlerimiz de süreci yakından izliyoruz. İlgili çalışmalarımızın
Çarşamba günü partimizin grup gemisi ziyareti ise bölgesel gelişmeler bağlamında hassas bir zamana tekabül etti. Görüşmemizde ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere Pakistan'la çok boyutlu işbirliğimizi ele aldık. Kardeş Pakistan halkına olan güçlü desteğimizi tekrar teyit ettik. Türkiye olarak bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Pakistan'la Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz. The Supreme Court made sensational remarks on the Pegasus spyware issue, which created a nationwide uproar. The court said that it is not wrong for a country to possess spyware for the national security interest. However, it emphasized the need to scrutinize how on whom such spyware is used. Several petitions were filed in the Supreme Court over the allegations that this spyware was used to surveil journalists and civil society members in India. The court held a hearing on these petitions today. The lawyer representing the petitioners demanded that the centre clearly state whether Pegasus was used or not. He also pointed out the Supreme Court has previously ordered a technical expert committee to investigate the matter and submit a report, something the centre has not yet provided. Responding to those arguments, the bench stated that while there is no issue with using spyware, it should only be used against anti-national elements, not civil society. The court strongly noted that national security should never be compromised. Additionally, the Supreme Court stated that it is not appropriate to make the technical committee's report public, as it pertains to national security and sovereignty. If individuals involved in this case seek information from the report, it can be provided to them, but it should not become a document of public or state level debate, the bench clarified. पहले दे चुका हूँ। तो मैं ऐसा है गोविंद, मैं निकलता हूँ। रुके ना 5 मिनट। सर से बात कर लेते हैं। 10 मिनट। हमरा को रोके लिया। ठीक है। हम देख लेंगे। हम तक में। हमरा को रोको नहीं सको। हाँ। वो हमारे बंद होने जा रहा है। क्या हम ढोल आके बेचे। अन्ना पप्पू जाता है तिहाड़े में सांसद जिले में ये शार्ट में है। पहले दे चुका हूँ। तो मैं ऐसा है गोविंद, मैं निकलता हूँ। रुके ना 5 मिनट। सर से बात कर लेते हैं। AIMIM leader Varis Patan stated that Modi government had introduced the Waqf Amendment Act 2025, a move that triggered widespread debate and was currently under consideration by the Supreme Court. He explained that in response to what was being viewed as an unconstitutional law, the All India Muslim Personal Law Board had made an appeal, which was also supported by AIMIM President Asaduddin Owaisi. As a part of this protest, he said that a nationwide call has been made for people, regardless of their background, to switch off the lights of their homes, shops, offices and other establishments for 15 minutes on April 30th from 9 p.m. to 9:15 p.m. मोदी सरकार द्वारा एक बिल लाया गया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, जिसके ऊपर काफ़ी
चर्चा चली, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मैटर पेंडिंग है। इसी बिल के और इसी एक्ट के विरोध में जो ये टोटल असंवैधानिक कानून बना रही है मोदी सरकार, उसके विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अपील की है और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन साहब ने भी अपील की है कि कल 30 अप्रैल रात को 9 बजे से लेकर 9:15 तक, यानी सिर्फ 15 मिनट के लिए हमको, आपको, सबको हमारे घरों की, दुकानों की, हमारे जहां जहां जगह है, ऑफिसों की बत्ती बंद करना है। हम लाइट ऑफ करके रखेंगे 15 मिनट तक। हम ये पैगाम देना चाहते हैं मोदी सरकार को कि आपने जो असंवैधानिक बिल लाया, जो पूरा वायलेशन है फंडामेंटल आर्टिकल 14 का, 24, 25, 26 का, उसके विरोध के अंदर ये एक प्रोटेस्ट है हम सबकी जानिब से। तो मैं अपनी जानिब से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे तमाम से कि आप भी कल वेडनेसडे 30 अप्रैल रात 9 बजे से 9:15 बजे तक 15 मिनट के लिए अपने घरों की, दुकानों की, जगहों की बत्ती बंद करें और हो सके तो वो एक वीडियो, फोटोग्राफ निकाल के सोशल मीडिया पे डालें ताकि ये बात दिल्ली तक पहुंचे, सबको पता चले कि ये हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का तरीका है, ये इस काले कानून के खिलाफ। मोदी सरकार द्वारा एक बिल लाया गया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, जिसके ऊपर काफी चर्चा चली, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मैटर पेंडिंग है। इसी बिल के और इसी एक्ट के विरोध में जो ये टोटल असंवैधानिक कानून बना रही है मोदी सरकार, उसके विरोध में मुस्लिम पर्सनल। During her visit to Kerala, the chairman of the National Commission for Women, Vijaya Rahatkar, mentioned that she was in Ernakulam to conduct a public hearing, Jansanwai, on behalf of the Commission. She noted that many women from the region had submitted complaints to the NCW but were unable to travel to Delhi to pursue their cases. In response, the Commission had decided to come directly to Ernakulam to meet these women and address their concerns in person. She reported that a total of 36 complaints were received during the public hearing. Additionally, she shared that the Commission had conducted a meeting with internal committees and members of the local communities to discuss the issue of the sexual harassment in the workplace, aiming to raise awareness and ensure stricter implementation of protective measures. यहाँ की महिलाओं ने एनसीडब्ल्यू में कंप्लेंट्स करी है। बहुत महिलाएं ऐसी है कि जो दिल्ली में एनसीडब्ल्यू तक आ नहीं पाती है प्रत्यक्ष रूप में, तो इसीलिए हमने खुद ही यहाँ पे आने का एक निर्णय किया और हम ही उनके पास आए हैं और आज जनसुनवाई यहाँ पे करी है। आज के इस जनसुनवाई में हमारे पास करीबन 36 कंप्लेंट्स थी और 36 कंप्लेंट्स में से आज हमने 31 कंप्लेंट्स में आइदर हमने वो क्लोज करी है या उसका समाधान आज हमने उन महिलाओं को करके दिया है। 5 केसेस जो है वो अभी भी ऑनगोइंग है, चल रही है। मुझे विश्वास है कि जब स्वयं कमीशन ऐसे प्रदेशों के डिविजनल लेवल पे आता है, महिलाओं की जो कंप्लेंट्स है उसको हम देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप में महिलाओं को बहुत रिलीफ मिलता है। ये प्रयास हमारा हमेशा के लिए चलता रहेगा। आज इसके साथ साथ और 2 कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं। एक कार्यक्रम जो हुआ है वो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस की जो कमिटीज होती है पॉश के अंतर्गत, उन सभी आईसीज इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी का आज उनके साथ यहाँ पे आज हमारी मीटिंग हुई है और ये रिव्यू मीटिंग थी कि वो किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। आज के इस मीटिंग में हमने बहुत प्रयास किया है सबका ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से पूरा करने का और प्रत्यक्ष रूप में जो आईसीज है वो कागज पे न रहते हुए अच्छे तरीके से काम करे, इसके लिए आज हमने आग्रह किया है। उनको ये भी कहा है कि ये काम करना उनको कंपलसरी है क्योंकि कानून के साथ आप काम करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज का जो यहाँ का उनका ट्रेनिंग भी हुआ है, रिव्यू मीटिंग हुई है, उसको उनको बहुत उसका उपयोग होगा, फायदा होगा। अभी अभी मैं एर्नाकुलम का जो वन स्टॉप सेंटर है उसको विजिट करने के लिए मैं जा रही हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास अनेक जो पावर्स है और शक्तियां है, मैंडेट है, उसमें से एक बड़ा मैंडेट ये है कि जो विमेन इंस्टीट्यूट्स होती है उसको हम विजिट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ उसका निरीक्षण करते हुए
वहाँ पे किस तरीके से काम होता है उसके बारे में हम कह सकते हैं, सरकार को सूचना भी कर सकते हैं। आज मैं वन स्टॉप सेंटर की विजिट भी करने के लिए यहाँ पे जाऊंगी। यहाँ Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath remarked on significance of the ongoing efforts under the Swachh Bharat mission, which was launched on October 2nd, 2014. He emphasized that in the past, people used to dispose of the garbage on the streets or in drains, causing blockages and creating an environment conducive to the spread of diseases like encephalitis, malaria and dengue. He pointed out that such unsanitary conditions led to health hazards, including an increase in mosquito-borne illness. Adityanath also noted that as a part of the Smart City plan, the inauguration of a new garbage transfer station was a step towards addressing these issues. He highlighted that the initiative aligns with the goals of the clean and green energy, which has been a major target for the country as part of the mission. He underscored the commitment to cleanliness and public health as essential components of urban development. ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो घर घर में कूड़ा इकट्ठा होता है, अक्सर होता क्या था कि लोग अपने घर के कूड़े को सड़क पे फेंक देते थे, नाली में डाल देते थे। नाली में डालते थे तो नाला बंद होता था, जल निकासी नहीं हो पाती थी, सड़कों पे पानी बहता था, गंदगी दिखती थी, मच्छर होते थे, और मच्छर होंगे तो बीमारी भी होगी। इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, ये सभी बीमारियां मच्छरों से ही पैदा होती हैं। और यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने जो एक टारगेट दिया, एक लक्ष्य दिया कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, यानी जीवन की उच्च गुणवत्ता उसे मिले। इसके लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए, समाज के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का अभियान प्रारंभ हुआ। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लिए एक देश के सामने लक्ष्य तय किया गया। 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और इस दिशा से जो अभिनव प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस अभिनव प्रयास के परिणाम स्वरूप आज स्मार्ट सिटी की परिकल्पना सामने आई है। तो स्मार्ट सिटी में कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जाता है, आज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण का एक कार्यक्रम उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं नगर निगम गोरखपुर को, महापौर जी को, यहां के पार्षदों को, सभी को और महानगरवासी जो इसका सर्वाधिक लाभ लेंगे, उन सभी को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। Haryana Minister Anil Vij condemned the Pahalgam terror attack, attributing it to terrorists from Pakistan. He expressed the nation's collective anger and outrage over the incident, which emphasized that every citizen of India stands firmly with the Prime Minister Narendra Modi, asserting that the entire nation is united in supporting whatever decision the Prime Minister deems necessary in response to the attack. His statement underscored the country's resolve in addressing the acts of terrorism and maintaining national unity. ये जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे देश में कार्रवाई की है, इसे सारा देश उद्वेलित है। हम ये बताना चाहते हैं शपथ लेकर कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तन मन धन से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। और नरेंद्र मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे, सारा देश उनके साथ।
ये जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे देश में कार्रवाई की है, इसे सारा देश उद्वेलित है। In the aftermath of the Pahalgam terror attack, authorities in Jammu and Kashmir took swift action by deporting Pakistani nationals. According to the reports, the Jammu Kashmir police transported these individuals in a police bus for deportation. This measure was a part of the ongoing response to the terror attack, which was attributed to militants from Pakistan. The authorities have been working to ensure national security and prevent further cross-border terrorism, making decisive steps to manage the situation and address the growing concerns following the incident. यही है आपने क्या है यही लोग हो क्या ठीक आ रही है कितनी यही है आपने क्या है यही लोग हो क्या ठीक आ रही है कितनी The Supreme Court has directed the Central Bureau of Investigation (CBI) to initiate 7 preliminary inquiries into the alleged unholy nexus between the real estate developers and banks in New Delhi and the National Capital Region. A bench comprising Justice Suryakant and N. Koteshwar Singh issued the order while learning petitions filed by aggrieved home buyers. These buyers had booked flats under subvention schemes in the areas like Noida, Greater Noida and Gurugram. They alleged that the banks were coercing them to pay the EMIs despite not receiving possession of their homes. The court noted that such a nexus had caused immense hardships to middle class families. The first set of inquiries will target firms including the Supertech as well as others operating in Noida, Gurugram and Ghaziabad. The bench described the builder bank arrangements as exploitive and unfair. It stressed the need for an independent and impartial investigation. The move is seen as a step towards delivering justice to the thousands of affected home buyers. France has called Israel's decision to ban French parliamentary delegations from entering the country unacceptable. The move came after Israel alleged that the visit was being organized by an entity accused of supporting terrorism. In response, the Israeli embassy stated that any individual member of the delegation still wishing to visit should directly coordinate with the embassy. Israel emphasized that it would not facilitate visits managed by organizations it believes support terror activities. France, however, strongly objected to sweeping ban, stating that it undermines the diplomatic norms. The diplomatic tension marks a new strain in Franco-Israeli relations. French officials are now evaluating further response to the restriction.
The issue has drawn international attention for its implications on bilateral engagement. Both the nations continue to stand firm on their respective positions. An MOU was signed between the Ministry of Labour and Employment and Rapido, a prominent bike taxi hiring platform. The agreement was signed in the presence of Union Minister for Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandavia, and Union Minister of State for the Labour and Employment, Shobha Karandlaje. The collaboration aims to strengthen workforce engagement and improve opportunities within the GIG economy, particularly for bike taxi riders. Dr. Mandavia and Shobha both expressed support for initiatives that will enhance worker welfare and provide better employment conditions. The MOU is expected to bring positive outcomes for the workers and business within the sector. इसी तरीके के बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे जुड़े और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस पोर्टल का बाकी जो पोर्टल से मुकाबले ये है कि जिस तरह का कोलैबोरेशन इस प्लेटफॉर्म का है वो एकदम अभिन्न है। इस प्लेटफॉर्म में केवल जॉब मैचिंग ही नहीं है पर रेंज ऑफ करियर सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, चाहे वो कैरियर काउंसलिंग की सर्विसेज हों या किसी और तरीके की सर्टिफिकेशन सर्विसेज हों, सारी की सारी सर्विसेज एक ही जगह पर वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह इसी तरीके के बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे जुड़े और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस पोर्टल का बाकी जो पोर्टल से मुकाबले ये है कि जिस तरह का कोलैबोरेशन इस प्लेटफॉर्म का है वो एकदम अभिन्न है। That's the end of the bulletin. Keep watching CVR News English.